Hi friends, welcome to my YouTube channel Rishabh Study Group, and today we will learn NCERT Science Book Chapter 5, the Fundamental Unit of Life. Friends, actually I have covered some relevant topic of this chapter. If you haven't looked those videos, you have to only click on the links which I have shared in my description box. And friends, now I am going to tell you what I have covered so far. So friends, number one, we have covered the topic, the discovery of the cell, where we have learned that who discovered the cell. Then we learned that all living organisms are made up of cells, and we have done some activities to prove it. Then friends, we have learned the famous scientists, their cell theory and their discoveries and their works, what they have done. But friends, recently we are covering the structure of the cell, where we have covered its subtopic, which is plasma membrane. And friends, if you remember, I have said that the second name of the plasma membrane, which is cell membrane. So friends, you can write it because it is very important. You will later ask these questions in 1 marks. So friends, we have covered this plasma membrane topic, where we learned some important solutions which are released during the process of osmosis. So friends, those solutions are hypotonic solutions, isotonic solutions and hypertonic solutions. These are the main three solutions which you have to understand it strongly. If you have understand these three solutions, you will never face any problems in our later on topics. Now friends, our next topic is cell wall. Actually friends, cell wall is nothing but it is the additional rigid outer covering in the plant cell. Actually friends, here we have learned that plasma membrane is a selective permeable membrane which is located in the animal cell. Now cell wall is the another outer covering membrane which is located in the plant cell, which is absent in the animal cell and present in the plant cell. Now friends, a cell wall is the most outer covering of the plant cell. Beside this membrane there presents plasma membrane, and plasma membrane, as we know, selective permeable membrane, and cell wall is permeable membrane which allows everything to grow through it. Actually the main compartment which is responsible for the building of cell wall, which is known as cellulose. Cellulose is responsible to build it. Now we have to explore this topic. Actually friends, cell wall is responsible to increase the rate of absorbing of water and minerals in the cell. Actually by absorbing more water and more minerals, the swellness occur in the plant cell, so that there may be some chances to collapse or to burst in plant cell, because it is too soft that more water, and by absorbing more minerals they may burst or they may collapse. So actually friends, cell wall prevents these chances. Cell wall actually or provide the structural strength to the plant cell. So here we have covered the topic of plant cell. Now our next topic is nucleus. So friends, in nucleus we learned that Robert Brown was the scientist who discovered the nucleus in the cell, and they described or declared that nucleus is as the brain of the cell, which control all the cell organelles or all the behaviors or biochemical changes, and all the growthness occurs in cell is totally the work of nucleus. It is the boss. So friends, we have learned its function. Now we have to learn its structure. So firstly we have to learn its outer structure. हमें उसके बाहरी तहत को समझना है. So friends, its outer structure, it is similarly as the plant cell. वो plant cell की ही तरह होता है. Plant cell में जैसे दो coverings थे, एक था plasma membrane और दूसरा था cell wall. Similarly in nucleus there are two membranes, which is nuclear membrane and nuclear envelope. नाउ फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर एनवेलप है, इसी वजह से ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये वेल डिफाइंड है. अब मैं आपको इन फर्दर आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड और पुअरली डिफाइंड. सो फ्रेंड्स, वी हैव लर्नड इट्स आउटर स्ट्रक्चर, दैट द स्ट्रक्चर देयर आर टू कोटिंग ऑन द न्यूक्लियस. नाउ वी हैव टू लर्न इट्स internal section. So basically nucleus contains some chromatin materials which is known as chromosomes, which is look like the rod shape, which contains the information of the characteristics. फ्रेंड्स, ये जो क्रोमोसोम्स है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स का है. अगर वो फेशियल सेल है तो वो फेस का जो कैरेक्टर होगा, जहां जैसी स्किन पाई जाती है, उस कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन वो कैरी करेगा. नाउ फ्रेंड्स, क्रोमोसोम्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड डीएनए, इन द डीएनए जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट विच परफॉर्म्स द लेटर ऑन फंक्शन. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीन्स, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है वो जीन्स ही है, जीन्स ही इंफॉर्मेशन है. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव लर्नड न्यूक्लियस. We have covered the animal cell nucleus as well as the plant cell nucleus, because there is no difference between these two nucleus, the nucleus of plant cell and the nucleus of animal cell. There is no difference, but there is a difference between the nucleus and the nucleus.
नाउ आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियोइड अब क्या है. एक्चुअली फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द बैक्टीरिया और अ वायरस विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. सो हियर फ्रेंड्स, जो वायरस है और जो बैक्टीरिया है ये एक ही सेल से बना हुआ है जिसका न्यूक्लियस इतना वेल डिफाइंड नहीं होगा. But why the nucleus in the virus or the bacteria is not well defined? So here is the main reason behind this is the two coating which is present in the nucleus is absent in the nucleoid, because there is only present the nuclear envelope and nuclear membrane is absent. मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया और जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट वी कांट सी इट आवर बाय आवर नेक्ड आइज, हम अपने बिना किसी ऑप्टिकल्स और बिना किसी गैजेट के उन चीज़ों को नहीं देख पाए, तो उनके जो सेल हैं वो इतने वेल डिफाइंड नहीं होते बिकॉज दे हैव एब्सेंट देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो they have not some consequences in their nuclear functions. They only learn how to grow and how to feed themselves and how to provide energy to the cell organism. So here we have covered the topic of nucleus. Then our next topic is cytoplasm. Actually friends, cytoplasm is a jelly like structure which consists the cell organism in it. It plays the similar role as the orbit plays the role in the solar system. Friends, do you know what role plays by the orbit in the solar system? Actually, it is a path on which planets move on it. It is a definite path. ये एक definite path है जिसपे solar systems में जो planets होते हैं वो इसी path पे revolve या rotation करते हैं. वो इस जगह से हिलते नहीं हैं. अगर वो हिले तो क्या होगा? What would happen if planet moves from its orbit? क्या होगा अगर planet अपनी जगह से हिल जाए, अपने orbit से हिल जाए? तो सिंपल इसका जवाब सबको मालूम है, टकराव होगा प्लैनेट्स के बीच और वो हाँ एक धमाका होगा जहां जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं बच सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा. सिमिलरली इन सेल there presents a cytoplasm which performs the role of orbit. It is the sticky materials which sticks the cell organism in it. यहाँ जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि लेबर्स ऑफ सेल हैं, जो कि सेल के लिए काम करते हैं, वो इस साइटोप्लाज्म में चिपके हुए रहते हैं, तो वो मूव नहीं कर पाते. जिससे वो मूव नहीं कर पाते तो उनके बीच का जो टकराव का जो चांसेस था वो कम हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है. अब वो आपस में भिड़ नहीं सकते, कोलैप्स नहीं होंगे. If cytoplasm is not present in the cell, then cell organisms will collapse with each other and the cell will not exist. अगर सेल ऑर्गेनिजम्स ही बर्स्ट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो सेल ही नहीं एग्जिस्ट कर सकता. तब उसके लिए काम कौन करेगा, उसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा कोई. That's the reason cytoplasm is the important structure which helps to sustain the life of cell. Now friends, our next topic is cell organism. I have already told you that what are the cell organisms. It is similarly as the labors of the cells which do the works for cell to provide cell energy or to provide them nourishment or to provide them energy in the form of ATP. So friends, here जो सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या काम करते हैं, सेल के लिए काम करते हैं डिफरेंट, ताकि सेल सस्टेन रहे, सेल अपना काम कर सके. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनिज्म है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनिज्म है. अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल के अंदर का एक पार्ट है. तो दीज आर द सेल ऑर्गेनिजम्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज द पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म. मीन्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फ्रेंड्स, ये सेल ऑर्गेनिज्म के ही अंदर आएगा. तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स. सो फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द लार्ज membrane bound tubes which forms the large network besides the nucleus. It is nearby the nucleus. ये न्यूक्लियस के पास रहता है और काफी बड़े नेटवर्क में ये फैला हुआ है. मतलब इसके जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और इसके ट्यूब पे एक मेम्ब्रेन बाउंड कोटिंग रहती है. एनिमल सेल में और क्या है फ्रेंड्स कि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, कि इनके जितने भी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब पे कोटिंग चढ़ी रहती है जो कि उनको प्रिवेंट करती है फॉरेन इन्वेडर से. So that's the reason membrane is applied over the surfaces of all cell organisms. So here the endoplasmic reticulum is the membrane bound tube which is nearby the nucleus. So अब हम इसके फंक्शन समझते हैं. So friends, there are two types of endoplasmic reticulum. ये बहुत बड़ा पार्ट है और मतलब फैला हुआ है बहुत बड़े पार्ट में, और उसी पार्ट को हमने दो पार्ट में इन फर्दर डिवाइड कर दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है RER, which is known as rough endoplasmic reticulum. Why its name is rough?
because it seems rough under the microscope. If we see it under the microscope, the surfaces will look like rough in the endoplasmic reticulum. Means इसका जो हाफ पार्ट अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं और उसको नोटिस करते हैं तो we will find some roughness on the surface of endoplasmic reticulum. So that's why it is known as rough endoplasmic reticulum. अब हम समझते हैं कि rough क्यों है, क्या चीज उसको रफ बनाती है. So there presents the beans like structures which is known as ribosomes. Actually ribosomes are present over the surfaces of endoplasmic and make it रफ. मीन्स एक राइबोसोम एक यूनिट होता है स्मॉल, वो ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है जो कि उसे रफ बनाता है. नाउ द वर्क ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू प्रोवाइड मोर प्रोटीन इन द सेल. Then we have covered this rough endoplasmic reticulum. Now we have to cover SER, which is known as smooth endoplasmic reticulum. So friends, why it is smooth? Because ribosomes are not present on the surface of smooth endoplasmic reticulum. And the main function of smooth endoplasmic reticulum is to synthesize lipid and to synthesize some enzymes which kills some toxic materials present in the cell. फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि सेल काम करते हैं, हर सेल ऑर्गेनिज्म अपना अपना काम करता है. तो उस काम से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी का जो आउटपुट, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा? बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में. अब वो क्या है, वो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. तो उस टॉक्सिक चीज़ों को, जहरीली चीज़ों को मार दिया जाता है सेल के ही अंदर. एक इंजाइम्स पैदा करता है. वो इंजाइम्स कौन पैदा करता है? SER. उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हाफ पार्ट है which provides or release the enzymes which kills the toxic substances present in the cell. Now friends, SER also release some hormones which boosts the cell wall, means or the plasma membrane. So friends, ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, अगर वो टूट जाए या कहीं से ब्रेकआउट हो जाए, तो वहाँ ये एक हार्मोन रिलीज करता है SER, जो कि उस जगह को फिर से फुलफिल कर देता है और उसको मतलब बुल करने के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल है. नाउ फ्रेंड्स, beyond this SER or RER, if we talk about the whole endoplasmic reticulum, it also provides some biochemical places where biochemical things can be done or where biochemical reactions can be done. Means अगर हम SER और RER से हटकर बात करें, अगर हम पूरे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लें, तो उसके लार्ज नेटवर्किंग के वजह से वो लार्ज जगह पे फैला है, तो उसके वो एक बायोकेमिकल जगह भी प्रोवाइड करता है जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सके. नाउ हियर वी हैव कवर्ड द होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक. नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी apparatus. इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स व्हिच स्टोर प्रोटीन और लिपिड्स और एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द टर्म Camillo Golgi was the famous scientist who discovered the Golgi apparatus in the cell. So it is named after his name, which is Camillo Golgi, then Golgi apparatus. Means Camillo Golgi ने Golgi apparatus को डिस्कवर किया, जिसके वजह से उनके नाम से ही इनका इस कंपार्टमेंट का नाम रखा गया, Golgi apparatus, Camillo Golgi. So here friends, Golgi apparatus is the membrane bound vessels which store the protein or lipids which is provided by the endoplasmic reticulum. And endoplasmic reticulum, you can say it like endoplasmic reticulum release or provide energy to their target site by the help of Golgi apparatus. Means Golgi apparatus डिस्पैच करता है सामान वहां से और बाकी जगह पे जिनको एनर्जी की जरूरत है वहां उनको पार्सल करता है. द सेकेंड वर्क ऑफ Golgi apparatus, it sometimes converts the complex sugar into the simple sugar and it is also responsible for the formation of lysosomes. मीन्स फ्रेंड्स, Golgi apparatus एक तो डिस्पैच करता है सामान, दूसरा कि वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करता है, और तीसरा कि वो लाइसोसोम्स एक आगे हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइसोसोम्स भी रिलीज करने लगता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम्स. सो फ्रेंड्स, लाइसोसोम्स, इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड sacs in which high quality of enzymes are carried out. These enzymes are released by the RER. मीन्स फ्रेंड्स, ये जो सैक्स है टंग की, जिसे हम एक बाउल कह सकते हैं, उन बाउल्स में हम एक इंजाइम्स वो कैरी करता है, जो कि वो जो इंजाइम्स है वो RER के द्वारा रिलीज की जाती है. उस इंजाइम्स में एक ऐसी खासियत होती है, द इंजाइम्स कैन डाइजेस्ट एनी स्ट्रॉन्ग मटेरियल वेरी इजिली. मीन्स वो जो इंजाइम है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल को इजिली डाइजेस्ट कर लेता है. So lysosomes is also responsible for the cleaning of the cell because it dispose or parcel out the waste materials present in the cell, and it also digests the waste materials present in the cell. So it cleans the cell.
लाइसोसोम्स सफाई करता है सेल की, वहां जो भी हार्मफुल और टॉक्सिक चीजें प्रेजेंट रहेगी उनको वो डाइजेस्ट कर लेगा अपने अंदर. और देयर मे बी सम चांसेस इफ द mitobolism of the cell will disturb and the cell may burst, then lysosomes are present. The sacs will burst and enzymes will produce which digest the burst cell. That's why lysosomes are also known as suicide bags. Then friends, here we have covered the topic lysosomes. Now friends, our next topic is plastids. Here plastids are the one and only compartment which is present in the plant cell, which is not present in the animal cell. It is present only in the plant cell. Actually friends, plastids are the component which provide nourishment or provide some extra inherited things to the plant cell. For example, the photosynthesis is the process which is provided by the plastids to the plant cell and which is not provided by it through the animal cell. Means ये plastids photosynthesis provide करता है plant cell को. Actually there are two types of plastids. Number one plastids is leucoplast and number two is chromoplast. Friends, chromoplast contains green pigments which is known as chlorophyll, which is in further carried by the chloroplast. Chloroplast is of green color. And friends, yellow and orange color are carried by the chromoplast. And no color means transparent. Leucoplasts are the transparent materials as like the water. Means friends, do you correlate something by this? Actually friends, how can a man can convert green chili into a red chili? So friends, the main science behind this, they will convert the chloroplast of that green chili to the chromoplast. That's why this color changes into the red one. So friends, these are the plastids. Friends, plastids are also the compartments which contain its own DNA. Friends, DNA are the main and very important, means you can correlate it with the VIP persons. As the VIP person, these DNA are the most important things. So friends, plastid contain its own DNA. We will also learn some another compartments which contain its own DNA. Now here we have covered the topic of plastids. Now friends, our next topic is mitochondria. We will learn this topic in our later on videos. So friends, if you like this video, please comment me in my comment section and also subscribe it and also press the bell icon so that you will get the first notification of my recent videos. Thank you.